Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Darsul Quran for Ramzanul Mubarak Day 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 سے شروع ہو رہا ہے. Today the dars is going to start from the verse 105 of chapter 2 Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. O ye who believe, say not to the Prophet Ra'ina, but say Unzurna, and hearken unto him, and for the disbelievers is a painful punishment. What are the Ra'ina and Unzurna? The word Ra'ina belongs to the mayor of Mufa'ala, which generally gives the sense of reciprocity, denoting two parties
standing almost on the same level, and may mean have regard for us that we may have regard for you, are being traced to the root ra'in, which means a foolish or conceited fellow. The word signifies O fool or O conceited fellow. As this expression involved disrespect to the Holy Prophet, God forbids Muslims to use such words and advises them to use language which is respectful and unequivocal, unequivocal, such as the word unzurna, meaning wait for us, after mentioning the intridious which the Jews of Arabia and carried on with outsiders to ruin the mission of the Holy Prophet. The Quran proceeds to illustrate in this verse such of their machinations as they resorted to in order to belittle the Holy Prophet and saw dissension and discord among Muslims. An apparently minor illustration is selected to emphasize the fact that where the spirit of the people is concerned, sometimes very small things bring about dangerous results which un- which undermine among them the spirit of the discipline and respect for authority. Verse 106. Ma yavaddul kafaru min ahlil kitab. They who disbelieve from among the people of the book or from among those who associate gods with Allah desire not that any good should be sent down to you from your Lord, but Allah chooses for His mercy whomsoever He pleases, and Allah is Lord of exceeding bounty. Verse 107. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Whatever message we abrogate or cause to be forgotten, we bring one better than that, or the like thereof. Knowest thou not that Allah has the power to do all that He wills? There are some notes. Aya means message, sign, command, or a verse of the Quran. Another note, it is mistakenly inferred from this verse that some verses of the Quran have been abrogated. The conclusion is patiently erroneous and unwarranted, have been abrogated. The conclusion is patently erroneous and unwarranted. There is nothing in this verse to indicate that the word ayah refers to Quranic verses.
Both in the preceding and the following verses, the reference is made to the people of the book and their jealousies against the new revelation, which shows that the ayah spoken of in this verse as being abrogated refer to the previous revelations. It is pointed out that the previous scriptures contained two kinds of commandments. First, those which, owing to changed conditions and to the universality of the new revelation, required abrogation. Second, those containing eternal truths which needed resus- resuscitation so that people might be reminded of the forgotten truth. It was therefore necessary to abrogate certain portions of those scriptures and bring in their place new ones, and also to restore the lost ones. So, God abrogated some portions of the previous revelations, substituting them with new and better ones, and all the same time reintroduce the missing portions by similar ones. This is the meaning which is consistent with the context and the general spirit of the Quranic teaching. The Quran has abrogated all previous scriptures, for in view of the changed conditions of mankind, it has brought a new law which is not only better than all the old laws, but is also meant for all men for all times. An inferior teaching with a limited mission must give place to the superior teaching with a universal mission. In the verse, the word nansakh, that means we abrogate, relates to the word bikhairin, that means one better. And the word nunsiha, that means we cause to be forgotten, relates to the word bimisliha, that means the like thereof, meaning that when God abrogates a certain thing, he brings a better one in its place, and when he causes a thing to be forgotten, he resuscit- resuscitates it. It is admitted by Jewish scholars themselves that after the Israelites were carried away in captivity to Babylon by Nebuchadnezzar, the whole of the Pentat- Pentateuch was lost. Verse 108. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawat. Knowest thou not that the kingdom of the heaven and the earth belong to Allah alone, and there is no protector or helper for you beside Allah? Would you question the messenger sent to you as Moses was questioned before this? And whoever takes disbelief in exchange for belief has undoubtedly gone astray from the right path. Vadda kasirum min ahlil kitab.
verse 110. There is a note for the verse 109. This verse mentions another artifice which the Jews employed to overthrow the mission of the Holy Prophet. They asked him absurd and silly questions as had no bearing no religion on no as had no bearing on religion. This they did to in, inoculate Muslims with the spirit of stupid questions so that the dignity of faith should suffer and they may fall victim to doubts. Verse 110. Vadda kasirum min ahlil kitab. Many of the people of book wish out of sheer envy from themselves that after you have believed, they could turn you again into disbelievers after the truth has become manifest to them. But forgive and overlook till Allah brings His decree. Surely Allah has the power to do all that He wills. Verse 111. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, and observe prayer and pay the zakat, and whatever good you send on before you for yourselves, you shall find it with Allah. Surely Allah sees all that you do. Verse 112. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. And they say, none shall ever enter heaven unless he be a Jew or a Christian. These are their vain desires. Say, produce your proof if you are truthful. Here is a note. The Jews and the Christians both suffer from the delusion that only a Jew or a Christian could obtain salvation. Verse 113. Bala man aslama wajhahu lillah. Nay, whoever submit himself completely to Allah and is the door of good, doer of good, shall have this reward from his Lord. No fear shall come upon such, neither shall they grieve. Here is a note. The Jews and the Christians both suffer from delusion that only Jew or a Christian could obtain salvation. Balaman aslama wajhahu. Wajh means face, the thing itself, object and motive, deed or action, to which a man directs his attention. The desired way, favor or countenance. That is the end for the dars of today. Today's dars is going to end. Now I'll go to the Urdu section of this dars. आज का दर्स सूरतुल बकरा की आयत नंबर 105 से शुरू होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। ऐ ईमानदारो,
रसूल को मुखातिब करके राइना मत कहा करो और उन्जुर ना कहा करो, और तवज्जो से उसकी बात सुना करो, और याद रखो कि मुनकिरों के लिए दर्दनाक अजाब मुकद्दर है। राइना तफसीर सगीर का नोट है। अरबी में किसी को मुतवज्जे करना हो तो राइना कहते हैं, मगर ये उस वक्त कहा जाता है जब दोनों ग्रोह बराबर दर्जे के हों, क्योंकि राइना के माने हैं कि तू हमारा ख्याल रख, हम तेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन जब मुखातिब दर्जे में बड़ा हो, उस वक्त रायना नहीं कहते बल्कि उनजुरना कहते हैं, यानी ए हजूर हमारा भी ख्याल रखिए और ऐसी तर्ज पर बात कीजिए कि हम भी समझ सकें। इस आयत में मुसलमानों को यही कहा गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना ना कहा करो, इससे तुम्हारे दिलों में बेईमानी पैदा होगी, क्योंकि इस लफ्ज के असल माने ये हैं कि हम तुम बराबर हैं। तुम उनजुर ना कहा करो ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब मलहूज रहे, बल्कि तुम्हें चाहिए कि उसकी बातें पहले ही तवज्जो से सुना करो, ताकि ना राय ना कहना पड़े ना उनजुर ना कहना पड़े। आयत 106। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन, अहले किताब में से और नीज मुशरिकों में से जिन लोगों ने हमारे रसूलों का इनकार किया है, वो पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से किसी किस्म की खैर और बरकत उतारी जाए, और भूल जाते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है, और अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैर मिनहा, जिस किसी पैगाम को भी हम मनसूख कर दें या भुलवा दें तो उससे बेहतर या उस जैसा पैगाम हम दोबारा दुनिया में ले आते हैं। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह हर एक अमर पर जिसका वो इरादा करे पूरा पूरा कादिर है। इस बारे में तफसीर सगीर का नोट है कि इससे ये मुराद नहीं कि हम कुरान शरीफ की किसी आयत को मनसूख कर दें, बल्कि मतलब ये है कि जब जब हम किसी निशान को टला देते हैं तो उससे बेहतर निशान ले आते हैं, या कम से कम वैसा ही निशान और जाहिर करते हैं ताकि दुनिया के लिए हिदायत का मूजब बने। मुफस्सिरीन ने इसके ये माने किए हैं कि जब कुरान की कोई आयत मनसूख की जाए तो वैसी ही आयत और आ जाती है, लेकिन अगर किताब ही की आयत मुराद लेनी हो तो इस आयत के ये माने लेने चाहिए कि अगर हम तौरात और इंजील में से किसी हिस्से को मनसूख कर दें तो कुरान करीम में या तो वैसी ही तालीम नाजिल कर देंगे या उससे बेहतर नाजिल कर देंगे। कुरान करीम की कोई आयत मनसूख नहीं, ना क़यामत तक मनसूख होगी। तो इससे ये मजमून बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि कुरान करीम में कोई भी नसख नहीं है। पहली जो शरीयतें मौजूद थीं वो अपने वक्ती होने की वजह से या मखसूस अक़वाम के लिए होने की वजह से वो तो काबिल मनसूख थीं, लेकिन कुरान करीम चूँकि दायमी है और तमाम जहानों के लिए है, इसलिए अब इसकी तनसीख नहीं है। ये क़यामत तक के लिए शरीयत है और इसी पे अमल होगा। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावात, क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना मददगार। आयत 109। हम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम, क्या तुम अपने रसूल से उसी तरह सवाल करना चाहते हो जिस तरह इससे पहले मूसा से सवाल किए गए थे, और भूल जाते हो कि जो शख्स कुफर को ईमान से बदल ले तो समझो कि वो सीधे रास्ते से भटक गया। अहले किताब में से बहुत से लोग बाद इसके कि हक उन पर खूब खुल चुका है, उस हसद की वजह से जो उनकी अपनी ही जानों से पैदा हुआ है, चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान ले आने के बाद तुम्हें फिर काफिर बना दें। बस तुम उस वक्त तक कि अल्लाह अपने हुक्म को नाजिल फरमाए उन्हें मुआफ करो और उनसे दरगुजर करो। अल्लाह यकीनन हर एक अमर पर पूरा पूरा कादिर है।
वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। और वो यानी यहूदी और मसीही ये भी कहते हैं कि जन्नत में सिवाय उन लोगों के जो यहूदी हों या मसीही हों हरगिज कोई दाखिल नहीं होगा। ये महज उनकी आरजुएं हैं। तू उन्हें कह दे कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। इस पे तफसीर सगीर में नोट है कि इस कलाम के ये माने हैं कि यहूदी कहते हैं कि सिर्फ यहूदी और मसीही कहते हैं कि सिर्फ मसीही जन्नत में दाखिल होंगे। ये मुराद नहीं है कि यहूदी ये समझते हैं कि यहूदी और मसीही ही जन्नती हैं और मसीही समझते हैं कि मसीही और यहूदी ही जन्नती हैं। बला मन असलम वजहू लिल्लाह। यहूदियों और ईसाइयों के इस दावे के मुकाबिल पर अल्लाह ताला कहता है कि और बताओ कि दूसरे लोग क्यों नहीं दाखिल होंगे। जो भी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे वो नेक काम करने वाला भी हो तो उसके रब के यहाँ उसके लिए बदला मुकर्रर है। और उन लोगों को ना आइंदा के मुतल्लिक किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो किसी साबिक नुकसान पर गमगीन होंगे। आज का दर्स इसी पे ख़त्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।